Assalamu alaikum, dear students of class 10th. Welcome to your e-learning class of chemistry with your teacher Hubru. Chapter is acids, bases and salts, and the topic we are going to discuss today is the pH and pOH scale. In 1909, Sorensen proposed a scale for the measurement of strength of acids and bases. By using this scale, we can easily measure whether the acid or a base is strong or weak. Now, what does pH and pOH means? Well, this P stands for protons. This is a German word which means the potential or power to be. H plus stands for hydrogen ion and OH minus stands for hydroxyl ion. Now, the pH scale proposed by Sorensen ranges from 0 to 14. This pH scale can measure the strength of any acidic or basic solution. The acidity or basicity of any solution depends upon the number of hydrogen and hydroxyl ions. Larger number of hydrogen ions will make the solution acidic, while more concentration of hydroxyl ion will make the solution basic. Where and how do we use pH scale? Before using pH scale, we use pH paper. pH paper is used to determine whether the solution is acidic, basic, or neutral. These are the pH strips. These pH strips are pieces of paper that changes color. pH of any solution is determined by dipping part of the paper into the solution of interest and watching the color change. You can see the color change. After the color change, we match the color with pH scale and get the pH value of the solution. Wow, this scale looks very beautiful and colorful. Now you can see that this scale ranges from 0 to 14. 0 to 6 is for acidic medium and 8 to 14 is for basic or alkaline medium, while 7 is for neutral. Now in acidic range, 0 to 3 is for strong acids and 4 to 6 is for weak acids. Similarly, in basic medium, 8 to 11 is for weak bases and 12 to 14 is for strong bases. Here you can see the pictures of some common strong and weak acidic and basic substances. Now, what actually happens to the molar concentration of hydrogen and hydroxyl ions that the solution become acidic, basic or neutral? So I have told you earlier that in acidic medium, hydrogen ion concentration is always greater than the hydroxyl ion concentration. You can see in the graph, hydrogen ions are greater in acidic medium while hydroxyl ion concentration is smaller. While in basic medium, hydroxyl ion concentration is always greater than the concentration of hydrogen ions. In neutral solution, both the concentrations are always equal. That's why the solution becomes neutral. Now here comes the proper definition of pH. pH is defined as a negative logarithm of the molar hydrogen ion concentration. It is mathematically represented as or written as pH is equal to negative log of molar hydrogen ion concentration. According to this equation, we can calculate the pH of water. As we know that in pure water, molar hydrogen ion concentration is 1 into 10 raised to power minus 7. So putting this value in this equation, we get pH is equal to negative log 1 into 10 raised to power minus 7. In the next equation, we have applied the power rule of logarithm as you have learned in your mathematics, where we rewrite the power as the product of the exponent times the log of the base. The base here is 10, so we put log with the 10. As you know in your log that log 10 equals to 1, so this equation becomes as pH is equal to 7 minus minus plus, it gets 7 and log 10 equals to 1. So pH of water comes 7. Definition of pOH: the negative logarithm of the molar hydroxide concentration. Mathematically, it is written as pOH equals to negative log of molar hydroxide ion concentration.
According to this scale again, we are calculating the pOH of water, as we know that hydroxide concentration in pure water is 1 into 10 raised to power minus 7. So putting this value in this equation, we get pH equals to negative log of 1 into 10 raised to power minus 7. Now applying the same power rule here again, we get this and this as the answer. So pOH of water is also 7. This clearly shows that the molar hydrogen ion concentration and molar hydroxide concentration in pure water is always equal. How we can calculate both the pH and pOH for a neutral substance? As we know that Kw equals to molar hydrogen ion concentration and molar hydroxyl ion concentration, and these all equals to 10 raised to power minus 14. So just to make it positive and a bigger value, we are taking negative log on each side of this equation. We get negative log Kw equals to negative log this term and negative log 10 raised to power minus 14. We get this equation 1. Now here negative log Kw equals to another term that is called as pKw. Here P stands for potential of ionization constant of water. Now in this equation, instead of negative log Kw, we will write pKw. So above equation 1 becomes as pKw. Here we have applied the product rule of logarithm, where the product of the log becomes the sum of the log. And here we have applied the power rule of the log, where this 14 comes here and log comes to the base. Now as we know that negative log H plus equals to pH and negative log OH equals to pOH, so we will put this pH and pOH in these brackets. Instead of these terms, we will put pH and pOH in the next slide. Now this was our previous equation. In this equation, instead of negative log H plus, we put pH plus, instead of negative log OH, we put its value pOH. pH plus pOH equals to this term. Now solving this term, minus minus plus, and this 14 comes here. Log 10 equals to 1, 14 into 1. pH plus pOH equals to 14. Hence proved that the sum of pH and pOH for a neutral solution is 14. As we have done earlier, that pH of water comes 7 and pOH of water comes 7. So these both becomes 14. Now let's solve a numerical. Here in this numerical, we are given with nitric acid solution whose concentration is 0.001 molar, and we are supposed to calculate its pH and pOH. First we have to write its equation. Nitric acid HNO3 in aqueous solution dissociates into H plus and NO3 minus ions. As its concentration is 0.001 molar, so definitely इसके ions की concentration भी यही होगी. Now we are given with hydrogen ion concentration. So hydrogen ion concentration equals to 0.001 molar. Here we are omitting the point. Point हटाने के लिए point जब हटता है तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं 1 and after point there are 3 digits, तो हमने यहाँ पे 3 zeros लगा लिए हैं. It comes 1 over 1000. 1 into 10 raised to power 3. 1000 की जगह we can write 10 raised to power 3. ये 10 raised to power 3 जब ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या होगा, ये पावर के साथ जो पॉजिटिव साइन है ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन नाइट्रिक एसिड. नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पीएच एंड पीओएच. अब यहाँ पर हमारे पास इस सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन तो है ही नहीं, हाइड्रोक्साइड आयन तो है ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ हमारे पास हाइड्रोजन आयन है. सो फर्स्ट हम इसमें क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं. पीओएच तो हम इसका फाइंड आउट ही नहीं कर सकते बिकॉज इसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन तो है ही नहीं, राइट. सो वी विल यूज दीज टू फॉर्मूला. पीएच इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग एच प्लस, यहाँ पर हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पुट कर सकते हैं जो कि हमें गिवन है. एंड पीओएच के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14. Now starting the solution or starting solving it,
pH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग H प्लस, यहाँ पे हम H प्लस की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 10⁻³ पावर रूल अप्लाई करेंगे, ये नेगेटिव साइन इसी तरह नीचे आ जाएगा और ये पावर यहाँ पर आ जाएगी और लॉग किसके साथ लग जाएगा, बेस के साथ, log 10। एज वी नो दैट log 10 इक्वल्स टू 1, तो log 10 की जगह हमने 1 डाल दिया एंड माइनस माइनस बिकम्स प्लस, सो 3 इंटू 1 और pH हमारे पास आ गया नाइट्रिक एसिड का क्या, 3। नाउ फॉर POH वी विल यूज दिस फॉर्मूला, pH प्लस POH इक्वल्स टू 14। यहाँ पर हमने pH की जगह डाल दिया वैल्यू 3, POH हमने कैलकुलेट करना है, 14 उसी तरह लिख लिया। POH को चूंकि हमने कैलकुलेट करना है, हम इसको इक्वल के इज इक्वल टू के इस साइड पर लेकर आ जाएंगे एंड दिस 3 कम्स ओवर हेयर। जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव साइन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, 14 माइनस 3 एंड वी गेट 11। So as a result, we got both the answer, pH equals to 3 and POH equals to 11. Let's solve another numerical problem in which we are given with potassium hydroxide solution whose molar concentration is 0.01 molar and we are supposed to calculate its pH and POH again. First we have to write its equation in which KOH dissociates to give K plus and OH minus ions. Its concentration is 0.01 molar. As you can clearly see in the equation that we are given with only hydroxide ion concentration, there is no hydrogen ion present in the KOH solution. Again, we will omit its point. We get 1 divided by 100. Instead of 100, we can write 1 divided by 10 raised to power 2. This 10 raised to power 2 becomes 10 raised to power minus 2. We are required to calculate its pH and POH. Now you can see कि हमारे पास pH के लिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन नहीं है, so we will use formula POH equals to minus log OH minus because given में हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन है, इसलिए इस दफ़ा हम फॉर्मूला यूज करेंगे POH का। pH का फॉर्मूला हम यूज ही नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट नहीं है। pH कैलकुलेट करने के लिए we will use pH plus POH equals to 14. Now starting the solution, POH equals to negative log hydroxide ion. Hydroxide ion की जगह हमने उसकी concentration put कर दी, that is 10 raised to power minus 2. Log rules apply करते हुए, जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ, उसको apply करते हुए we get POH equals to 2. Now for pH कैसे कैलकुलेट करेंगे? pH उसी तरह हमने लिख लिया, POH की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, that is 2. pH को इज इक्वल टू की साइड पे अकेला छोड़ देंगे एंड 2 को हम उस साइड पे इज इक्वल टू की सेकेंड साइड पे ले जाएंगे. इट विल बिकम 14 माइनस 2 एंड यू गेट pH इक्वल्स टू 12. Now it's your turn to solve some numerical problems. Try to solve it by yourself on your rough notebook. First numerical is calculate the pH and POH of 0.5 molar solution of HCl. आप यहाँ पर देखें कि 0.5 मोलर है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, सो देयर इज नो यूज टू ओमिट द पॉइंट. ठीक है, फिर आप ये चेक करें कि HCl में आपके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है या हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन है. अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है सो यू विल डेफिनेटली यूज द फॉर्मूला ऑफ pH which is equal to pH is equal to negative log of H plus ions. फिर आप H plus ions की कंसंट्रेशन पुट कर दोगे. pH का आंसर जब आपके पास आ जाएगा, फिर pH प्लस POH फॉर्मूला यूज करके आप POH कैलकुलेट करोगे. सेकेंड न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द POH ऑफ 0.05 मोलर H2SO4. यहाँ पर आपको सिर्फ कहा गया है कि आपने POH कैलकुलेट करना है, ठीक है, बट द सोल्यूशन इज एसिडिक. एज यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर हमारे पास इस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस नहीं है. तो इसलिए आपने पहले क्या करना होगा, पहले अपने पॉइंट ओमिट करना होगा, देन आप pH कैलकुलेट करोगे फर्स्ट, क्योंकि सोल्यूशन में हमारे पास हाइड्रोजन आयंस हैं, हाइड्रोक्सिल आयंस नहीं है. pH कैलकुलेट करके उसके बाद pH प्लस POH इक्वल्स टू 14 वाला फॉर्मूला यूज करके आप POH कैलकुलेट कर दोगे. Next numerical is calculate the pH of 0.2 molar solution of NaOH. Now this solution is basic क्योंकि इसमें hydroxyl ions हैं.
पर आपको कहा गया है कि आपने पीएच कैलकुलेट करना है। वेरी सिंपल, अगेन आप इस सोल्यूशन का पहले पीओएच कैलकुलेट करोगे, ठीक है। नेगेटिव लॉग OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन 0.2 मोलर आप ये पुट करोगे, सो पीओएच आपके पास आ जाएगा। जब पीओएच आ जाएगा देन you will put this value of pOH in pH plus pOH equals to 14 formula। इस फॉर्मूला में आप पुट करोगे, आपके पास फिर pH का आंसर भी आ जाएगा। I am giving you the answer key. Please try to solve these numerical problems on your rough notebook by yourself. Well, this is the end of today's topic. I hope you have understood the concept of pH and pOH. Allah Hafiz.